Hi everyone, I think we are live now. Hello everyone. Those who are done with slot 3, I think once again the paper was sort of similar to slot 1 and 2. Students are saying again it's easy to moderate, a little bit lengthy. Some type of different types of questions in abstract, I think, has come up. And once again, BARC, there were grammar heavy as it was earlier in the slots before. So similar to that. For QA, we got reviews that it was once again easy. So just a summary. There were no puzzles once again, as it was in slot 1 and 2. Paper was lengthy, but it was easy to moderate. Similarly, in VARC, there were grammar heavy questions, and in QA, the questions were easy to solve, but a little bit lengthy once again. So ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल आई थिंक इट इज इजी टू मॉडरेट बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट वंस अगेन वही था कि हु इज स्कैनिंग द पेपर फर्स्ट and solving the easiest questions will be gaining the maximum number of marks. So for the students who are going in slot 4, this is the only mantra that you need to carry. Scan the paper first, then go to solving easiest questions first, and then go on with your strategy. And yeah, नो puzzles, so a lot of students have that in their mind कि puzzles के लिए इतना prepare किया but आया नहीं. But yeah, some sort of surprises are there in CET every year, so there were no puzzles. Coming to what should be in your mind if you are maybe in slot 5 and 6. What generally opinion that I'm getting from a lot of students is that even if you solve basic questions, अगर आप कोई भी topics कॉन्ट्स बोल लो या कोई भी एक टॉपिक के बेसिक क्वेश्चंस भी अगर आप करके गए होते तो दिस एग्जाम वाज वेरी डूएबल. So questions were easy, but everything depends upon question selection and how much more you can score. Any questions are there in the chat box? We'll try to answer. Doable. So question. Okay. It was easy. No, not tough or moderate. It was easy. Students are asking. Uh, Sort of similar to the previous two slots. Also, I mean, hearing there are some sort of GK questions, general knowledge questions. So nothing to, worry about or prepare at this moment. But yeah. Okay. I think once again, if you're talking about cutoffs, it should be anywhere around 160 plus, which is similar to slot 1 and 2. तो जितना 1 and 2 के लिए cutoffs expect किया था 160 के ऊपर ही रहेगा. Closer to 155, 160 is what we feel. So good to see that three of the slots are almost similar with certain new type of questions in each of these slots. And once again, there are a lot of arrangement questions, लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चंस. ये एक हाईलाइट है. पिछले दो स्लॉट्स में भी हुआ था, इस स्लॉट में भी हुआ है कि रैंकिंग द नंबर्स, रैंकिंग द लेटर्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्लासरूम, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, हाउ मेनी फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मेनी फ्रॉम राइट. ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे. तो एलआर में स्टूडेंट्स अब वही क्वेश्चंस पिक करना जो
इजी टू सॉल्व है, यानी फास्टर आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इजी टू सॉल्व ही होने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, सारे क्वेश्चंस इजी टू सॉल्व होने वाले, बट जो जल्दी सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली आपको उन्हीं को पिक करना चाहिए। एंड आरसीज भी थोड़ा सा, यू कुड से इट वाज इजी, बट स्टूडेंट्स फेल्ट स्लाइटली लेंदी इन बिटवीन. So once again, question selection mattered in VARC as usual. I will give you a brief in just a couple of moments for each section once again, for the students gearing up for the fourth slot. Just a couple of things to keep in mind. You will be given rough sheet, so definitely go and ask rough sheets. पहले ही ले लो. Take a transparent water bottle with you if you want to drink water during the examination. Go to the washroom beforehand. Don't wait till the examination starts and then go to the washroom, because they won't allow you to do that. And if your PC gets stuck, if your system is glitching, you have to immediately call the invigilator and ask him to change your system, because it is glitching. And you have to be aware that आपका टाइम स्टॉप हो जाता है, टाइमर पॉज हो जाता है, मे बी ग्लिच की वजह से थोड़ा फ्लो में प्रॉब्लम आ सकता है, बट बी ready for such those kind of situations. Just whatever we can do from our side, because after that then it is in the hands of CET cell only. वो लोग के हाथ में जो होगा वो करेंगे. But I think yeah. And coming to quants, I think last time first two slots में टाइम स्पीड डिस्टेंस के ज़्यादा क्वेश्चंस थे. ये वाले स्लॉट में आई एम हियरिंग की इनपुट सॉरी मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस है. एंड सिमिलर टू परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के भी ज्यादा क्वेश्चन है लास्ट टाइम दो स्लॉट में, इसमें भी हुए थे. एंड अ लॉट ऑफ अलजेब्रा एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, सिमिलर पैटर्न, बीआरसी में चार आरसी थे पांच क्वेश्चन के, तो इसमें भी चार आरसीज थे. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर पैटर्न दैट आई एम गेटिंग. नाउ कमिंग टू द ओवरऑल level of difficulty and number of questions, I will go section by section. So first, coming to logical reasoning, there were around three couple of very simple singlets in VA, and there were certain critical reasoning questions also that I'm hearing, which was not there in the first couple of slots. Around 20 questions were puzzles वाले but singlet वाले questions थे. Then VARC में चार आरसीज थे पांच क्वेश्चन के, तीन इजी टू मॉडरेट, वन थोड़ा डिफिकल्ट था. ग्रामर में अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस थे, विच वाज अगेन द सेम इन द अर्लियर स्लॉट. वोकैब में अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस थे, विच वाज अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस स्लॉट्स. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में काउंटिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस भी थे, तीन से चार. सीरीज ऑड मैन आउट वाले, जैसे कि मिसिंग इन द सीरीज, विच फिगर विल फॉलो इन द सीरीज, ऑड मैन आउट इन द सीरीज वाले 10 से 12 क्वेश्चंस थे. देर आर सम सेट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, जो तीन डिफरेंट सेट के थे इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. क्यूआई में दो डीआई सेट्स थे, एक इजी था, इजी टू मीडियम, एंड वन थोड़ा डिफिकल्ट. अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, which is similar to what it was in slot 1 and 2. टाइम स्पीड डिस्टेंस was कम था नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट वो आसान थे. टाइम एंड वर्क कम था बट थोड़ा सा डिफिकल्ट था. प्रॉफिट एंड लॉस वाज अगेन इजी. ठीक है. Got it. So this is what is our review for this slot particularly. Uh, Quite similar to how it was in the previous slots. So I think slot 4 people can also expect something similar only. आप लोग का चार आरसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वोकैबुलरी अराउंड 10 के पास एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो बेसिकली वीआरसी में आप ग्रामर, आरसी एंड वोकैबुलरी, ये तीन सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स है. क्वांट्स में दो डीआई सेट्स आने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चंस वहीं पे हो गए, जिसमें नॉर्मली एक ट्रेंड दिखा जा रहा है कि एटलीस्ट एक तो सब अटेम्प्ट कर रहे हैं. जो बहुत ही अच्छा होगा मे बी वो दो अटेम्प्ट कर रहा है, बट एटलीस्ट वन एवरीवन इज एबल टू अटेम्प्ट, सो डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 40 मोर क्वेश्चंस, जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस, अरिथमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चंस है. टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस. सो
इनिशियल जो टॉप हाई लेवल अरिथमेटिक टॉपिक के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, विच आर इजी टू सॉल्व, नॉट वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे क्वेश्चन इंट्यूशन से भी सॉल्व हो सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है, ऐसे भी क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में काउंटिंग फिगर्स के फॉर्मूलाज डेफिनेटली करके जाना, वो प्रिडोमिनेटली तीनों स्लॉट्स में आए हैं। सीरीज वाले क्वेश्चंस एनीवेज 50% ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हर बार होता है, द सेम ट्रेंड हैज बीन फॉलोड। Certain new type of questions in abstract reasoning, my only suggestion for students who are hearing this कि कुछ नया टाइप का क्वेश्चंस आ गया abstract reasoning में, now is not the time to think about it। अगर आपको एग्जामिनेशन में भी आता है नए टाइप के abstract reasoning क्वेश्चन, तो आप उनको स्किप करो एट दैट मोमेंट। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप उसको अटेम्प्ट करना। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्लॉट 4, 5 एंड 6 स्टूडेंट्स। डोंट वरी कि बहुत ही न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सबसे लास्ट में डिसीजन लेना है कि इसके ऊपर क्या करना है। जस्ट मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन। एंड कमिंग टू LR, अगेन सिंगलेट्स वर सिंपल, कपल ऑफ देम वर डिफिकल्ट, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, थोड़ा लेंदी था। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग LR वाले क्वेश्चंस। सो या आई थिंक स्लॉट 2 से थोड़ा सा कम जा सकता है कट ऑफ, बिकॉज सर्टेन स्टूडेंट्स हैव मेंशन्ड दैट इट इज स्लाइटली मॉडरेट लेवल, तो थोड़ा सा कम हो सकता है। अगेन ग्रामर हैवी है, तो आप लोग ने फाइंड द एरर, सेंटेंस करेक्शंस, ये वाले क्वेश्चंस किए हैं, तो यू विल गेट एन एडवांटेज। दैट हैज बीन सीन इन द प्रीवियस स्लॉट्स आल्सो, दैट इज द सेम फॉर टुमारो एज वेल, आई थिंक सो। Yeah, I think that is it. As I'm getting more and more data from my students, I will be giving you more updates, but this is it as of now. So, okay, so LR में singlets were lengthy with 2 puzzles of 2 marks each as well। मतलब कुछ कुछ ऐसे puzzles थे जो 2 questions के थे, which is again once again same that you have to keep in mind। दे आर नॉट पजल्स एक्चुअली, बिकॉज उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, बट पजल जैसे क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन थे, सो इट्स गुड टू अवॉइड देम। सो या आई थिंक दैट इज इट। Just to summarize it for the last time, abstract was very easy, but had 2 to 3 different type of questions. Also had 3 to 4 PYQ questions. तो abstract reasoning के लिए PYQ किसी ने नहीं किया तो कर लो. That is one key takeaway for abstract. Second, VARC was again easy to moderate. 4 RCs थे, 3 easy थे, एक difficult था, which was the same in slot 1 and 2। इजी vocab वर्ड्स थे 8 से 10, ग्रामर क्वेश्चंस थे 10 के आसपास। तो मेन आरसी ग्रामर एंड vocab ही था VARC में, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, एंड वो इजी टू मॉडरेट है, सो फोकस ऑन दैम। सेकेंडली, थर्डली क्वांट्स पे आता है। क्वांट्स वाज आल्सो वंस अगेन इजी टू मॉडरेट। 2 DI सेट्स 5 मार्क्स के, सेम पहले के 2 स्लॉट में भी था। एक इजी है, एक थोड़ा सा स्लाइटली आप बोल सकते हो मॉडरेट लेवल पे था। एंड बाकी सारे टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रॉफिट एंड लॉस अरिथमेटिक हैवी क्वेश्चन सिंगलेट्स में। उसके बाद में लास्ट है LR। LR है लेंदी, ठीक है, वो इजी है बट लेंदी है। कुछ क्वेश्चन इतने बड़े हैं बट उसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, सो आप उसको LR को सॉल्व करने से पहले आप सारे सिंगलेट्स, इजी सिंगलेट्स जो ज़्यादा लेंदी नहीं है उसको सॉल्व करना, एंड देन उसके बाद में जो लेंदी दिख रहा है एंड डूएबल है उसको सॉल्व करना। सो दैट इज द एंटायर analysis of the paper। So that is it, I think, very very similar to slot 1 and 2, so I hope the pattern continues in slot 4 also, and you can basis that judge your strategy or take steps। I think जो strategy बना के गए हो वही फॉलो करना चाहिए, कुछ अलग से आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। Yeah, that's it, Aditya, from my side। You want to add anything? नथिंग एल्स। अगर कोई चैट में है स्लॉट 3 वाले, तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, एग्जाम एक्सपीरियंस, टेस्ट सेंटर एक्सपीरियंस, so that other people can see।
बट ऐसा लग रहा है, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली बिकॉज फर्स्ट थ्री स्लॉट्स वर सिमिलर, मे बी इट्स अ सिमिलर पैटर्न बीइंग फॉलोड अक्रॉस द स्लॉट्स कि कितने आरसीज आ रहे हैं, कितने डीआईज आ रहे हैं। करेक्ट। तो ब्रॉडली सिमिलर आ रहा है, बट लेट्स सी हाउ स्लॉट 4, 5, 6 आर। बट फॉर अ रिलीफ ऑफ स्टूडेंट्स, अभी तक कोई भी स्लॉट टफ नहीं आया है। इट इज ऑल इजी, all doable questions. Just it is about question selection, maximizing your score. But ऐसा कोई भी स्लॉट में ऐसा नहीं हुआ है कि स्टूडेंट्स हैव कम आउट स्कैर्ड कि बहुत ही टफ पेपर आया है, इट वाज नॉट सॉल्वेबल। So I think it's very good for students this time. Yes, one RC काफी स्टूडेंट्स ने बोला डेमोक्रेसी वाला, इट वाज टफ टू रीड। Total again there were 4 RCs and one of them were tough. ठीक है guys, if you have any questions you can leave them in the chat. We'll try to answer them. We'll be back for the slot 4 analysis. In that, Vidhan will be that is Vidhan slot. तो उसका analysis बहुत अच्छा आएगा. The breakdown of questions. So don't forget to join that. For those in slot 4, 5, 6. Sorry, slot 5 and 6. 4 का will get a very detailed analysis, breakup of questions. So it'll be very helpful. And apart from that, whoever has enrolled for the second attempt in May, we will have a last batch for those students. Um, so you can enroll. हम लोग उसमें बहुत workshops और revision कराएंगे. So if you are interested, if you think कि आपका ये वाला attempt इतना अच्छा नहीं गया and you can improve, then do join that. If you've already enrolled in TTP, then obviously you are free and welcome to join those lectures. वो group पे आ जाएगा schedule. Yeah, and I think those who have already done with slot 1, 2, and 3, Abhi, I will request them to take 1 or 2 days off from this examination wala zone. Maybe a lot of information is coming, and then after that 2-3 दिन के break के बाद आप start करना second prep का. हम उसके ऊपर भी videos and sessions लेंगे as Aditya mentioned. So yeah, stay tuned for that. To summarize in one line, very similar to slot 1 and 2, slot 3 also. Slightly lengthy, you could say, which was also the case in slot 1 and 2. So yeah, LR was lengthy, बाकी सब easy है. So question selection and scanning the paper. This matters most, so keep that in mind. Okay. Hello guys, thank you for joining. Thank you, guys.